So hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you all are aware that every Sunday at 8 p.m. we are having this static GK discussion. Okay. Every Sunday at 8 p.m. we are having this static GK. I don't know what happened. Okay, I think I'm audible, visible. Everything is fine. I don't know what happened. The moment the class started, my camera went off. So I think now everything is crystal clear. I don't know what happened. The moment class started, my camera went off. Okay. So in the last class, last class was actually we had provided a recorded video because I was on leave. So we had done till here, right? We were talking about which of the following group of articles talks about right to equality. And the answer to this question was what? Kya tha iska answer? Please tell me. What was the answer to this question? The answer was option B, Article 14 and to add Article 18. B is the right answer to this question. Yes, Sarah Godbole will be having class every Monday at 3 p.m. on MHSET exam. Okay, so tomorrow we'll be having class at 3 p.m. Hannah, so I had told you also in the last class that please answer me about all the fundamental rights. So how many fundamental rights are there and which are those? कौन-कौन से fundamental rights है, कौन-कौन है वो? एक rough idea I'm talking about, है ना? Because that is also very important. Yes, option B, Article 14 to 18. So we are having 6 fundamental rights from Article. So basically, Part 3 of the Indian Constitution, from Article 12 to 35, talks about fundamental rights. Okay. So we have 6 fundamental rights. The first is right to equality, Article 14 to 18. Then right of freedom, Article 19 to 22. Right against exploitation, right, Article 23 24. Right of freedom of religion, Article 25 and 28. Cultural and educational right, Article 29 30. And right to constitutional remedies, Article 32. Okay. So these are 6 fundamental rights. Now, I am asking some more questions beyond this. मेरा और इससे आगे का क्वेश्चन है. The question is, how many fundamental rights, how many fundamental rights were there originally? पहले कितना fundamental rights था?
How many fundamental? 7. Yes. What was that 7th? वो क्या था 7th? And when it was removed? Yes, Path, you're right. लेकिन वो कौन सा था? When you're saying that we had 7 fundamental rights, what was that? Yes, it was actually right to property. Yes. So it was mentioned in Article 19(1)(f), and I think 31 maybe somewhere tha, hai na? So it was then moved towards Article 300 capital A, which is now a constitutional right, or sometimes they write legal right, but it should be called as constitutional right. Now you have to tell me which amendment. Yes, Sarah, you're right. 44th amendment, 44th constitutional amendment, which happened in which year, and who was ruling? Which party was ruling at that time? 44th constitutional amendment 1978, during the Janata Party time. They removed right to property from being a fundamental right, and now it has been inserted into Article 300 capital A, which is actually a constitutional right. Yes. So ये पता होना चाहिए basic चीजें fundamental right के बारे में. Okay, out of these, which was actually called by Dr. Bhimrao Ambedkar as heart and soul of the Indian Constitution? ये पूछा हुआ है. Heart and soul of the Indian Constitution. So this was asked in UPSC exam, and then later on in AILET exam also. Article 32. What is the meaning of this? Right to constitutional remedy. क्या होता है ये? ये होता क्या? What is that? Yes, Path, desperate, Sarah, you all were right. पता ही होता क्या? What is Article 32? So without Article 32, there is no meaning of these top 5 fundamental rights, because this is actually the teeth, or it's actually to protect the other fundamental rights. Without Article 32, there is no meaning of the other 5 fundamental rights. Yes, 5 writs. Right to constitutional remedy. Remedy means क्या? Solution. If your fundamental right is violated, if your top 5 fundamental rights are violated, you can use the 6th fundamental right to go where? Yes, Sarah, you're right. Huh? You can directly approach the Supreme Court under Article 32. Take a right to constitutional remedies. So if there is no 32, there is no meaning of the other fundamental rights. Quo warranto mandamus prohibition certiorari habeas corpus. Very good. You know all these fundamental 5 writs. Great. Yes, that is what you should know. So ये पता होना चाहिए. Let's move on to the next one. Who among the following headed the first day of Constituent Assembly on 9 December 1946? इससे related Constituent Assembly से अभी last year question आया था. They had asked about the constitutional advisor, and I used to teach here in this class. So students said thanks to me कि सर आपने जो बताया था वो आ भी गया. First day of Constituent Assembly. First day किसने? जो भी first chairman ये temporary chairman थे, temporary or interim chairman, या interim president of Constituent Assembly. That is what is being asked. Question पूछ रहे कि interim president या temporary president कौन थे? ये question है. The answer is Sachidanand Sinha. And later on, full-fledged president was Dr. Rajendra Prasad. है ना? So here the right answer is option D. Sachidanand Sinha headed the first day of Constituent Assembly, 9 December 1946. Later on, 2 days later, Dr. Rajendra Prasad became the full-fledged president of Constituent Assembly. The vice president was Mr. S.C. Mukherjee. And Dr. Bhimrao Ambedkar was chairman of which committee? Chairman of बताइए तो सही. ड्राफ्टिंग कमेटी. चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. ठीक है. चलिए अब एक और क्वेश्चन जो जिसके साथ बताते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दिस वाज आस्क्ड इन लीगल सेक्शन. And this I had taught last year multiple times. कई बार मैंने बताया था.
Yes, Sarah and Path, you both are right. B and Raw, very famous personality in the field of civil services. Okay, T is the right answer. Okay. Okay, let's talk about this. Let's talk about the next question. The next question is, I think, A should get. NITI Aayog was constituted under which article of the Indian Constitution? 202, 212, 323, none of the above. NITI Aayog. C should be capital, है ना? And you have to tell me the reason also. कहाँ लिखा, क्यों है, क्या है? Please tell me. Anyone? Will you take class on AOCC and FCRA? FCRA पर कल मैंने class लिया था. The Hindu analysis. Yesterday's The Hindu analysis. There was an editorial where I had discussed about FCRA bill. ठीक है. UCC पे I'm not sure. अगर मौका मिलेगा तो शायद मैं ले लूँ. Maybe I'm not sure about that. Yes, the right answer is none of the above. It is actually neither statutory nor constitutional body. Neither statutory nor constitutional body. It is nowhere mentioned in the constitution. तो आर्टिकल की बात ही नहीं होगी. So answer is D. So sometimes, yes, it replaced planning commission. Very good. So in March 1950, when Jawaharlal Nehru ji was the prime minister, planning commission PC was established. Planning Commission of India, which was headed by the prime minister, and there was a vice chairman. However, later on, in 2014, when Modi ji came to power, planning commission was abolished, and on 1st January 2015, NITI Aayog was set up. Okay, so D is the right answer to this question. Yes, that is right. National Institution for Transforming India, that's called as NITI Aayog. NITI. Okay. So who is the chairman of NITI Aayog? Who is the chairperson? Please tell me. Who is the vice chairperson? And who is the CEO of NITI Aayog? इन तीनों का नाम बताइए. Chairman is Modi ji, right? हाँ. Prime Minister is the chairman. ठीक है. Modi ji is the chairperson or chairman, and vice chairperson and CEO. Vice chairperson is Mr. Suman Berry and CEO was BVR Subramaniam. Now we are having a new CEO, है ना? तो chairperson is Modi ji, vice chairperson is Suman Berry, and CEO जो थे earlier was BVR Subramaniam, but now his tenure is complete. Now we are having Nidhi Chibbar as the CEO. ठीक है. So formed 1st January 2015 under Ministry of Planning, right? हाँ. Good. ठीक है. So okay, let's talk something about this. This is actually the national emblem of India. ठीक है. तो इससे एक दो सवाल पूछता हूं. तो जो टॉप में ये अशोकन लाइन कैपिटल है, एंड एट सारनाथ इन बनारस यू विल फाइंड दिस अशोकन लाइन कैपिटल. ये नीचे में लिखा सत्यमेव जयते. दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक? कौन सी किताब से लिया गया? ये तो सारनाथ लाइन कैपिटल हो गया. मुंडक उपनिषद. वेरी गुड. It has been taken from मुंडक उपनिषद. Yes, that has been right. You're right. ठीक है. तो आई थिंक मेरे ख्याल से काफी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया. Let's move on to the next one. Which of the following is the main concept behind involving DPSPs in Constitution? इसी बड़ा होना चाहिए. DPSP.
directive principle of state policy. हाँ, सभी होगा टू एस्टैब्लिश सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो कई बार लगा सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है ना, लाइक मिनिमाइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आर्टिकल 38, 39, 40 सब बात कर रहा है। एस्टैब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट, ऑफ कोर्स। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, ये तो सिंपल, ये तो देखो जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट, ये तो जनरली गलत होता भी नहीं इस तरह का स्टेटमेंट, तो जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी. Which part of the Indian Constitution talks about DPSP? Which part talks about DPSP? हाँ, पार्ट 4 36-51, so article 36 to 51 है ना. Okay, borrowed from Irish Constitution, right? It's above. Very good. हाँ, D is the right answer. 36-51 part 4. अच्छा, they are not justiciable, इसका क्या मतलब होता है? What is the meaning of this? You are saying, it is saying that DPSP is non-justiciable. What is the meaning of this? Sir, please do not schedule the class at 3 p.m. We have our offline class. Sorry, आप recorded देख लेना. Actually, the problem is actually it is scheduled by taking into account a lot of things. ठीक है ना? तो वो change कराना मुश्किल हो जाएगा. Can be challenged in courts. Can't be challenged in court, not enforced by the courts. हाँ, हाँ. So basically non-justiciable या non-enforceable लिखते हैं. ठीक है? ठीक है. It means that if the government is not implementing DPSP, if central government or state government is not implementing DPSP, then in that case you cannot go to the court by saying that you cannot file petition in the court to enforce it. कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हो कि देखिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके you cannot file a petition and say कि look, the government is not implementing. So the judge will say politely that sorry, this is non-justiciable, please read it about DPSP, है ना. वो बोलेंगे आपको आर्टिकल 37 पढ़ने के लिए. The judge will tell you please read article 37, है ना. It says that it is non-enforceable in the court of law. However, the principles mentioned in DPSP are fundamental in the governance of the country. ये लिखा हुआ है ना, पढ़िए 37 पढ़िएगा. ठीक है. The next is who among the following cannot vote in vice presidential election? Very interesting. Vice president election, and last year in August we have seen, July August we have seen vice presidential election. So now I think this time it becomes important. अच्छा, Supreme Court said like that, UCC 44. हाँ, मतलब it can be implemented by the court. So that is what the idea is. Yes, you are right. So yeah, the right answer is, देखो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ना स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. ऑल लोकसभा एंड राज्यसभा एमपीज वोट. ठीक है. सो द राइट आंसर इज सी, इज द राइट आंसर. स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट कम वोट. हाउएवर, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में उल्टा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, in case of vice president election, the people who vote are elected member of LS, elected member of RS, and nominated member of Lok Sabha and Rajya Sabha. So this is for vice president election. But president के लिए election के लिए उल्टा हो जाता है. President election requires elected MPs and elected MLAs. Elected MPs and elected MLAs. क्या मतलब हुआ? स्टेट का भी आता है एमएलएस. सो दे these include vice president के इलेक्शन के लिए, these include this one and this one.
ये प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, ठीक है। हाउएवर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ ठीक है, इज इट क्लियर? एमएलएज वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, स्टेट में आते, स्टेट से आते हैं ना ये लोग, दे कम फ्रॉम स्टेट्स, so they come go and vote for president election, but in vice president election MLAs do not go and vote. Vice president में हर तरह के MPs वोट करते हैं, all MPs, लोक सभा एंड राज्यसभा, both elected and nominated votes, but in president election there is no case of nominated MPs voting, सिर्फ elected members वोट करते हैं. You are started online if it's not visible on CL portal. CLAT estimate अब इसमें नीचे कॉल करना, because I'm taking a lot of paid classes, ठीक है। मैं मतलब 3 4 5 तो आराम से ले रहा हूँ, उससे ज्यादा ही होगा, आप इसमें कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, इफ यू हैव टू। आई डोंट नो इफ यू वुड सी इट फॉर परचेज इट, ठीक है ना। ये नीचे कॉल करना, पूछना, वो बता देंगे कौन से बैच में पढ़ा रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? ये समझ में आया? हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट वोट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, but I hope the answer, the idea you got it, है ना। I hope it should be crystal clear, hopefully, I believe, ठीक है। Let's move on, है ना। Minimum age for becoming a vice president is 35. Next is the articles related to official language are mentioned where, which पता नहीं capital small c कैसे लिखा हुआ है। So official language, how many official languages are there? First you tell me. This I have taught in the paid class. Official language, classical language, और कौन सा था? National language, scheduled language. So these things I have discussed in the paid classes. Official language कितनी है? So at part C, है ना? So part C, option C means part 17. So official languages are 2, not 22. ठीक है? One is Hindi, mentioned in Article 343, and another one is English, which is from Official Language Act. You can say, है ना? मतलब पहले 15 years के लिए थे, but now it has been extended. So, है ना? 343 to 351 talks about official language, mentioned in part 17. So when you read 343, it talks about Hindi being official language. Hindi in Devanagari script, ऐसे लिखा होगा. Yes, there it is. Official language of the Union, 343. Official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script, but that's it. This is Devanagari script. और ये सब जो इंग्लिश में लिखा है, दिस इज रोमन स्क्रिप्ट, है ना। ये सब रोमन स्क्रिप्ट होते हैं, तो जानते होगे फुली, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लिखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, लेकिन नीचे में देखो लिखा नॉट समथिंग पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द यूज ऑफ दिस सेट पीरियड ऑफ 15 years इंग्लिश आल्सो, एंड लेटर ऑन इन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर extended further, ठीक है। So we are having Hindi and English as official language. If someone is saying that in 8th schedule we have 22 languages mentioned and those 22 languages are official language, then this is a wrong. Those 22 languages mentioned in 8th schedule are not official language. In fact, out of these 22 only Hindi is mentioned here. In fact 22 में English है भी नहीं. After set period of 15 years, 15 साल के लिए इनिशियली अलाउ किया गया था, ठीक है, by parliament, but now it has been extended. Notwithstanding anything in clause 1, for a period of 15 years from the commencement of the constitution, English shall continue to be used for the official purpose, which also be used. मतलब ये हुआ कि हिंदी तो है ही official language, but from the commencement of the constitution, 26 जनवरी 1950 से लेकर next 15 years तक, English will also be used as official language. ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि even after 15 years, the parliament can pass a law and extend it further. So official language act, I think 1967, आप year check कर लेना, official language act talks about it further extending the English language as official language. समझ में आया? हिंदी तो परमानेंट है, ये लिख दिया गया। अंग्रेजी के लिए बोला गया कि शुरू के 15 साल अंग्रेजी भी ऑफिशियल लैंग्वेज चलेगा,
फिर कह दिया गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो और 15 साल के बाद भी एक्सटेंड कर दे, तो पार्लियामेंट एक्सटेंड कर दिया, ठीक है. सो दैट इज वाई हिंदी एंड इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है. I have taught this in paid classes. Someone will be asking कि सर फिर 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? बिल्कुल नहीं है. You can open the 8 schedule, nowhere it's written, nowhere it's written. कहीं पे नहीं लिखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है. उसमें जो आर्टिकल्स भी लिखे होंगे उसमें भी जाके पढ़ोगे, कहीं पे भी नहीं लिखा, nowhere it is written that all these languages. In fact, जो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, इसमें एक्चुअली 22 लैंग्वेजेस देयर, ओनली हिंदी इज देयर, ओनली हिंदी इज एक्चुअली द ऑफिशियल लैंग्वेज, बाकी रेस्ट 21 इज नॉट. In fact, English is not present here. That also we will discuss. हो सकता है आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट संडे को हो सकता है we will discuss about it. इसलिए मैंने कहा संडे की 8 PM की क्लास देखते जाना, बहुत हेल्पफुल होगी. You will learn a lot of things. So technically the 8 schedule language अगर आप कहोगे तो क्या कौन सी लैंग्वेज, so you'll call it as, चाहे तो आप ये कह सकते हो कि इंडियन लैंग्वेज तो चलेगा, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, या इट्स बेटर टू यूज द वर्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस. दीज आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है. ठीक है ना. संभव शर्मा, क्लैट एस्पेरेंट, आई होप इट्स क्लियर. ये समझ में आया ना? ये बहुत छोटी चीज है. अच्छा, आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग. व्हेन यू रीड सम सबस्टैंडर्ड बुक्स, दे मेंशन दैट दीस 22 लैंग्वेजेस आर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है. पुअर क्वालिटी की बुक्स में सब लिख देते हैं. मैंने कहा कि एग्जाम में भी लिखा हुआ देखा है, वो मान लेते हैं सही, पता नहीं कैसे, बट दैट इज नॉट करेक्ट. इट्स नोवेयर मेंशन्ड, ठीक है. सो हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं. फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था? आई थिंक 52 से 57 होगा ना. देखो 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है. तो जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तो इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं था, ऑफ कोर्स. सो द प्रीवियस जो 1946 वाली इंटरिम गवर्नमेंट है वही चली आ रही थी. सो द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन एक्चुअली हैपेंड समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास 1957 से फरवरी 1952 तक चला, ठीक है. Okay, this is exactly the language that is mentioned in NCERT. So they say we call it as 1952 elections because most of the election part actually happened in 1952. इसको कहा जाता है 1952 elections, ठीक है. So that is what you should know. So first Lok Sabha 1952 से 57 चला. Even when we're talking about first Rajya Sabha election, that is also for 1952, ठीक है. And first presidential election also, as far as I remember, and vice presidential election also. But let me check. Why I'm saying, because this was asked in the exam. First president election in India. Yes, 1952, and vice president also. Yes, that's also. I was right. ठीक है. I was just verifying it, but yes, I was right. मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो इसमें कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है. So first लोकसभा इलेक्शन 1952, फर्स्ट राज्यसभा इलेक्शन 1952, फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन 1952, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 1952. So ये वाला पूछा हुआ है क्लैट में. 2-3 years back this was asked when they were asking about when Draupadi Murmu became she became the, or I would say Srimati Draupadi Murmu, when she became the president of India, जुलाई 2022. CLAT 2023 पूछा होगा. See this. ठीक है. They had asked about president election. They had asked about the new president, first president of India, first Dalit president of India, है ना. First presidential election when it happened 1952. इस तरह क्वेश्चन आया है. ठीक, उठा के देख लीजिएगा, है ना. So जैसे हमको PYQs याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, है ना. Try to remember it because this is actually you will be able to understand कि how which type of questions are asked in the exam. ठीक है. अच्छा, how many seats are there in Lok Sabha? How many seats? देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं विदाउट गूगल सर्च. गूगल सर्च मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा ना. तो तब सब आंसर मिल जाएगा आपको. हाउ मेनी सीट्स एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू से इज मिनिमम एज. आई वांटेड टू आस्क अबाउट से, है ना. हाउ मेनी सीट्स राइट नाउ?
आई एम नॉट सेइंग कि हाउ मेनी टोटल स्ट्रेंथ, कि टोटल कितना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो सकता है। राइट नाउ कितनी सीट्स है? ओरिजिनली नहीं, आज पूछ रहा हूँ, आज के दिन। आई एम येट टू गेट राइट आंसर। यस, आराध्या खारदे, यू आर राइट, 543 सीट्स इन लोकसभा। और मिनिमम एज कितना है फॉर बिकमिंग लोकसभा एमपी? हाँ, नाउ 543। मिनिमम इज 26 नहीं, 26 नहीं है, 25। 25 ठीक है, हाँ 25 राइट, हाँ 25। ओके अच्छा, लोकसभा एमपी है 543। इफ आई वांट टू मेक माय ओन पार्टीज प्राइम मिनिस्टर, देन हाउ मच सीट शुड आई नीड? अगर हमको अपनी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो कितनी सीट कम से कम चाहिए? आइदर अलोन और इन अलायंस, मिनिमम सीट दैट इज रिक्वायर्ड। द आंसर इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्या क्या होता है बताइए? 272, 273, अभी भी कंफ्यूजन है। बट सर, व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा, आंसर शुड बी कंप्लीट राइट बिकॉज़ सीट्स तो 5 नहीं। क्लैट एस्पिरेंट, आंसर शुड बी 543। जो 550 is maximum strength according to the constitution, means the parliament has fixed this. The constitution says that okay, parliament can extend maximum up to 550, but currently it is 543. So if they're asking how many seats are there in Lok Sabha, the answer is 543. ठीक है। अगर ये पूछा जाए how many seats constitution allows the parliament to extend the Lok Sabha seats, or to have like, or if the constitution, if they say कि how many seats maximum is allowed by the constitution, तब आप 550 आंसर करोगे। 550 और प्लस 2 वो होता था, तो वो तो खत्म हो गया ना, दैट इज ओवर एंग्लो इंडियंस। ठीक है, देखो 543 अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आपको चाहिए क्रॉस द हाफ मार्क, ये याद रखना, क्रॉस द हाफ मार्क। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज देखो यहाँ पे आसानी से बता रहा हूँ 543 डिवाइडेड बाय 2 इज 271.5, तो आपको चाहिए 272 सीट्स। यस, फॉर मेकिंग योर प्राइम मिनिस्टर। बट मान लो कहीं पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली वाली इवन नंबर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई देयर इज सम लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिच हैज 40 सीट्स, जस्ट गिविंग एग्जांपल, इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली एट स्टेट लेवल, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कितनी सीट्स चाहिए? सो सम पीपल विल से कि सर 40 डिवाइडेड बाय 2 20, नहीं, यू हैव टू क्रॉस द हाफ मार्क, मींस 21। इसलिए आई नेवर से कि हाफ, आपको ये लिखना वर्ड क्रॉस द हाफ मार्क, तो फिर आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। So if I say 543 divided by 2 is 271.5. So if I get 272, I have crossed the half mark. Yes, 21 हाँ, हमने हाफ क्रॉस कर गया। ठीक है, दैट्स व्हाट यू शुड बी नोइंग। है ना, इलेक्शन हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। ठीक है, ओरिजिनली 5 इतना सीट्स था एटसेट्रा, जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज लीडर ऑफ द हाउस एटसेट्रा एंड ऑल। ठीक है, now which type of minorities are recognized under article 30? This is actually generally asked in Jamia, AMU, इसमें काफी पूछते हैं minority institutions से related एग्जाम में, मैंने देखा। ठीक है, वैसे कहीं भी पूछ सकते हैं, but that is what I want to say कि this can be asked anywhere. Which types of minorities are recognized under article 30? अच्छा, एक और ऑप्शन लिखना था, ये ऑप्शन ई है। ठीक है, अब आप आंसर कीजिए, एक ऑप्शन छोड़ दिया था। हाँ, आंसर इज बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ये मेंशन लिखा। ठीक है, so when you read article 30, all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer education institution of their choice. ठीक है, religious and linguistic minorities are mentioned in article 30. अच्छा, now ये जो minorities define किया जाएगा, it should be defined at state level, district level या central level? क्या होगा?
Yes, Sarah, you're right. State level. And this is judgment of the Supreme Court in this regard. Okay, we are not going in that detail, but yes, the Supreme Court said state level. ठीक है, so religious and linguistic minority, यानी language के basis पर भी minorities define किया सकता है ना, है ना? So all three can work maybe. नहीं वैसे नहीं होगा ना सर. Answer is state level. That is the answer. Types of minorities defined with respect to state level. या अगर union territory है तो union territory level. For example, like नहीं पता अगर सेंट्रल लेवल पे होगा तो यू कैन से कि अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे सो हिंदूज विल बी इन मेजॉरिटी एंड द रेस्ट विल बी इन माइनॉरिटी, बट इन सम केसेस इवन हिंदूज कैन बी इन माइनॉरिटी इन सम स्टेट्स, है ना? सिमिलरली लिंग्विस्टिक में तो आराम से हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ओके, यू स्पीक हिंदी लैंग्वेज, ओके, एंड यू वेंट टू तमिलनाडु, तो योर मदर टंग हिंदी, you are now a linguistic minority, right? From this definition, because your language mother tongue is Hindi, and of course you are minority in Tamil Nadu. Even if let's say you are from Uttar Pradesh, you are a Hindu, and you are of course in Tamil Nadu the majority is of Hindu, but the idea is religion is fine, but from language point of view you are in minority, linguistic minority, है ना? concept समझना चाहिए. Whether it will be implemented every states or not is a different matter. I'm not sure about it. कि every states में ये properly implement है कि नहीं है, but the definition of that, that's what I'm telling you. जब ये कहा जा रहा all minorities whether based on religion or language means religious minority and linguistic minority both are mentioned in the constitution. First, है ना? Second thing is how it should be decided. Should be decided at all India level? No, it should be decided at state level. That is what the Supreme Court said, है ना? वो बहुत सारे जजमेंट है ना, टीएमएपाई फाउंडेशन केस और बहुत सारे केस है, और कौन कौन सा केस है, इनामदार केस एंड ऑल, ठीक है? सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफिकेशन टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देखें, बता सकते हो कि नहीं. इज नॉट. प्रेसिडेंट का पी कैपिटल होगा, सिटीजन का सी कैपिटल होगा. You will be surprised to know the answer of this question. When you get to know, if you do not know it, you will be really surprised to know that this should be the answer. चलो इतना मैंने हिंट दे दिया. Hint is answer would be surprising if you do not know. अगर पता है तब तो फिर पता है. Anyone? The right answer is option D. The Constitution does not talk about minimum age. No minimum age for being a Supreme Court judge. No minimum age mentioned in the Constitution or anywhere. कहीं mention ही नहीं. So the answer is D. I've told you, you'll be surprised. But practically speaking, it is not possible for a person less than 35 years to become a Supreme Court judge. Because, of course, if you want to become a High Court judge, you have to practice for many years, है ना? उसका rules है. Then you will become 5 years. उसका होगा फिर. Then, of course, like practically, it is not possible. कि a person less than 35 years, less than 35 years का, less than 45 years का शायद कोई नहीं बना होगा. वो तो रियली होते. less than 40 years के में कोई नहीं बना होगा. 45, 50, 46 के बाद ही बनते. But when it is saying the Constitution, so Constitution does not talks about it. And the Constitution mention नहीं है कि 35 साल का minimum age कितना होना चाहिए. But practically speaking, I would say 45, 50 के above ही लोग बनते हैं. Generally, 99% of the cases, 50 plus people generally. शायद ही कोई 45 के एज में बने होंगे. Mostly 50 plus nowadays, so 55, 57, 58 एज में जाके बनते हैं लोग, है ना? What is youngest a person can theoretically become for a Supreme Court judge? Theoretically, very difficult to say. Okay, hold on. देखो, theoretically बताता हूं. When you want to become a High Court judge, तो आपको क्या चाहिए? आपके पास एक LLB डिग्री होनी चाहिए और 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना.
एज अ जुडिशियल ऑफिसर और एज एन एडवोकेट, ठीक है। उसके बाद आप हाई कोर्ट के जज बने और 5 साल यहाँ चाहिए। सो आप मिनिमम कितने एज में LLB कर सकते हो, उसके लिए क्या रूल है, आई एम नॉट श्योर, आई नीड टू फाइंड आउट whether the bar council of India or someone has put some rule with regards to that. आप समझ जाओ ना। तो जो आप बोले कि थियोरेटिकली मिनिमम एज, तो मान लीजिए कोई आदमी कितना कम उम्र में 10th पास कर सकता है, देयर शुड बी सम रूल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। क्या अगर कोई बंदा बहुत ब्रिलियंट है 6 इयर्स का क्लास 10th एग्जाम दे सकता है? आई नीड टू चेक द रूल्स, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज यू हैव टू चेक द रूल। मान लीजिए सीबीएसई में, सीबीएसई क्या रूल है कि क्लास 10 के एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम इतना एज का होना चाहिए, आई नीड टू चेक इट, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, तो आपको ये पहले तो LLB डिग्री कितना कम उम्र में कोई पा ले, हो सकता है कोई 10 साल में पा सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। थियोरेटिकली कहोगे तो मे बी एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है, बट अगर प्रैक्टिकली भी देखोगे तो 35 तो खैर किसी हाल में नहीं हो, 35 इयर्स में हाई कोर्ट के जज नहीं बनते कोई, ठीक है। मिनिमम एज फॉर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड इज जनरली 14 इयर्स। अच्छा, राधे हैज रिटन, ओके। तो अगर 14 इयर्स है तो 2 साल 12 पास करेंगे, 16 इयर्स, उसके बाद फिर अगर 3 साल तो 19 साल है ना, उसके बाद फिर 19 के बाद 10 साल यहाँ प्रैक्टिस, 15 यहाँ, तो 1935 34 ईयर्स ऐसी होगी, ठीक है। खैर उतना डिटेल नहीं जाना है, नो नीड टू गो इन डिटेल। अच्छा, रिटायरमेंट एज खाली आप बता दो दोनों का, फॉर हाई कोर्ट जज एंड द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। एक हाँ, ऑप्शन बी इज अ नेसेसरी कंडीशन, नहीं, इट हैज नेवर बीन यूज्ड, रादर आर्टिकल 124 में मेंशन है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है कि प्रेसिडेंट इफ थिंक्स दैट द पर्सन इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, बट इट हैज नॉट बीन यूज्ड टिल नाउ। 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए 62 रिटायरमेंट एज, यस, गुड गुड, 60 नहीं, 62 हाई कोर्ट के लिए एंड 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ब्यूरोक्रेट्स के लिए 60 इयर्स है राइट नाउ। If you are an official, government official, you generally retire at the age of 60 years. Generally, I'm using the word because there is a scope of extension also, if the government wants. Okay, so we are stopping this class here. है ना? Now I'll be meeting you tomorrow at 3 p.m. with MHSET class discussion. Please press the like button, share this video. Thanks for watching. Have a nice day.